Hello everyone, welcome back to yet another interview episode of KlassBuzz. KlassBuzz is an initiative of Maharashtra Class Owners Association in collaboration with justbrainz Private Limited. It's an e-magazine. Through this e-magazine, we would reach out to class owners, the educators, to update them, upgrade them, to uplift them, and conduct a lot of various interviews, stories of great educationists, stalwarts from the industry, those who have contributed great into the education domain. So we did one first interview with arihantacademy. They are also into this industry from last so many years. Intention of doing this interview is, my friends, a lot of insights we get from this senior people, those who are running this industry from last 20-25 years. इस education industry में अगर हम 15 साल 20 साल भी टिक गए, मतलब that itself is a big thing. टिकना, sustain करना और grow करना. कुछ तो काफ़ी सारे कोचिंग क्लासेस या बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स एक 15 इयर्स में ग्रो अप होते हैं और वापस फेड आउट हो जाते हैं, बट टिके रहना, दैट इटसेल्फ इज देयर इज सम इनपुट, सम ग्रेट इनसाइट्स. थ्रू दिस वी कैन गेट knowledge, and all the people, those who are watching this interview, will get an insight into various aspects of coaching class community as well as education, would rather say. That is the intention of doing such interviews. Few days back, when we conducted a session at Badlapur, so many class owners were asking how we'll come to know this senior class owners and this industry experts, how they could survive for so many years, and then COVID came and many things happened, but they sustained. That was the intention. So this interviews, we'll be conducting such interviews of stalwarts, and yet another we have the second interview with one of our stalwart of our industry, and we have great demand, with great respect, and we pay tribute. Always we show that gratitude to this man who is sitting in front of us as great into this industry. He is a chartered accountant. Now see, that CA itself is a great thing, and he began his teaching career from Poddar school. Every coaching class owner somewhere started from some school or Poddar college, Matunga, and after teaching in many coaching classes, he started his own Iyer commerce classes, and from last 27-28 odd years, they are there in this industry across this western, we can say western part. They are been contributing to this young generation into commerce, especially very specialized. It is not that. Apart from that, he is also an NLP trainer. He is into Vedic Max, and he is actually a wonderful motivational coach, would rather say, because सिर्फ coaching classes ने कई सारे इनके पंख हैं, मैं कहूँगा. तो it's my privilege to take the interview today of a great stalwart from the industry, Iyer sir. I would always say Iyer sir. I would not say Ramanathan Iyer sir. It's like, because he was the person who had a great role of bringing me into Maharashtra Class Owners Association and supporting the way I used to work, and I had his blessings always, sir. So welcome, sir, to this yet another interview of KlassBuzz. Intention, as I mentioned, what best inputs we can do to those young generations or various coaching class owners, those might be struggling or might have faced a lot of challenges. So before we actually start, our viewers of the KlassBuzz, like, they would like to know your journey, sir. मतलब कहाँ से शुरू हुआ? हर एक जन की एक बहुत पावरफुल कहानी होती है, और वो इंस्पिरेशन हम लेना चाहेंगे आपसे, सर. Yes, sir. First of all, Prajesh sir, thank you very much for such a great introduction. I began my journey of teaching from the year 1985. Actually, in the month of May 1985, I attended Poddar College interview, and there I was rejected by them. अच्छा. Where I could not answer the questions properly. And मैं भी करने आ गया, CA तो बन चुका था. So during the period of 3 months, I did one public speaking course with Nazareth, and that course really boosted my confidence. It taught me the body language, how to speak, eye contact, how to add the sense of humor. Again, in the month of November, again the Poddar College had a vacancy. Okay. So again I applied for the vacancy, and in that interview I clicked and I passed, and from there the journey of teaching started. Great. At Poddar College teaching, I learned that I can teach. What is teaching? Then after 3 years I joined a coaching class called Expert Classes. There I learned how to teach, and how to engross and mesmerize the students. And then I joined 2-3 other coaching classes before I started my own
in the year December 1996 Wow. under the banner of Iyer Commerce Classes. It began with Andheri, with a rented place, and with God's grace, within 1 year, I purchased the same rented place. Superb. After 2 years, I again purchased the neighboring place. And during this period of 27 years, we got a lot of students who scored very well in Mumbai University exams. Basically, we were known for TYBCom expert students, I should say, specialized in TYBCom. So this has been the journey of the last 27 years. Of course, it goes without saying, this 27 years of journey had a lot of support from my friends in the coaching industry. I have been benefited by Praful Bhai's experience, Bhatia sir, J.K. Shah sir, Valavalkar sir, Bambani sir, Jariwala sir, and of course Prajesh sir and all the mcoa team supported me in every venture, in every step of my journey. Great, sir. Thank you so much for listening. Like, see, everyone starts somewhere. Everyone fails in the first step. Walt Disney भी fail हुए थे first इसमें, and everyone was, even Amitabh Bachchan was rejected, and everyone was rejected. Absolutely. But I will take a point here, to be very frank. Shakespeare used to always say, a teacher must be a dramatist. Yeah. Teacher must be a dramatist. Teacher should know a public speaking skill. See the difference, my friends. Like, he learned that public speaking skills, and then after that, when he gave the interview, so it is not what you teach, it is how you teach. Exactly. That makes a great deal. That is a learning which I would see here, because everyone might have, other people might have. Sir was a chartered accountant, so knowledge was already there. People are MSc, B.Ed, M.Ed, degrees are there, but everyone cannot deliver that thing. So public speaking skills, I would request each one of you to be a part. A good public speaker makes the subject more interesting, and that is what it is. Chalo, let's. Even I would like to add one more thing here. Even after 15 years of teaching, assuming that I know how to teach, still I joined Anupam Kher's Acting Academy. Oh, great. It was a 1 month course, 3 hours every day at SNAT College, near SNAT College, Juhu. And there I also learned many more things. Over and above what we have learned in these years of teaching, that Anupam Kher's Acting Academy really taught me how to act in front of the students. So teacher must be a dramatist. You must be a dramatist. You should know how to. Yes, see, if you'll see again here, after completing so many years, 39, 40 years, you might be teaching. Yeah. Right? Still, he is joining some courses, he is learning. That is what MCA and we always advise the class owners. Let us update ourselves, upgrade ourselves, and uplift ourselves. You have to keep on learning. That's a wonderful message, sir. Again, one more point to be added. Nowadays we use mic. Everybody uses mic. Yes. But even with the mic, we have the tendency to shout. We shout as if there is no mic. When I went for learning singing, I joined singing classes also. तो सिंगिंग टीचर बोलती थी कि यार तुम चिल्लाते क्यों है? You speak soft, soften your tone. वो चिल्लाने का काम माइक कर लेगा. Right. चिल्लाने का काम, वॉल्यूम बढ़ाने का काम माइक कर लेगा. You just speak softly, and that really increased my life in the teaching industry. Okay, right. So हमको आदत पड़ जाती है चिल्लाने की. Yes. तो अभी it is also a great learning. शायद फ्यूचर में हमारी आवाज भी दब जाए करके ऐसा. चलो सर, लाइक क्या है ना सर, आपकी जर्नी तो हमको समझ में आई, बट एवरी जर्नी इज नॉट इजी. कोई भी जर्नी इजी नहीं होता. कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस 2 बच्चों से 10 बच्चों तक जब हम लोग स्केल अप करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं, जब स्केल अप करते हैं. बराबर. So what were those typical challenges which you faced during your 27 years or 28 years into coaching industry and teaching industry, and how did you tackle those things? The most important challenge for any coaching class is number of students. Number 1 is number of students. Yes. Number 2 is number of students. Number 3 is number of students. And collecting the money from them. Before I started the coaching class, one of my friend told me कि मैं उसको पूछा था ये स्टाफ कहाँ से मिलेगा, टीचर कहाँ से मिलेगा, रूम कहाँ से मिलेगा, एसी कहाँ से खरीदना है.
तो बोला आयर एक सब सेकेंडरी है, तो खाली स्टूडेंट लेके आ, बाकी रूम, टीचर, एसी, एडमिन स्टाफ सब मिल जाएगा, वो सब सेकेंडरी है, इवन दो दे आर इंपॉर्टेंट. Yes. But on the scale of importance also, the primary importance is the number of students. एक बार student आ गया ना, बाकी सब secondary है. So I was very much a sort of number one salesperson in my organization. The main purpose was to bring the students, talk with the students, have that personal touch with the students, and by God's grace, I can reach with a sense of humor. It's a God gift for me that I can have a lecture which is very humorous. Students keep smiling, laughing all the time, even in accounts lecture. And Iyer class is known as classes with fun. So if at all you want to enjoy with learning, that is where the student used to describe the Iyer classes. So the primary challenge was bringing the students, and of course, if at all we have to show our face in front of the students. So first lecture used to be at 5:45 a.m. in the morning, and last lecture used to get over at 9:30 p.m. for 6 days, and Sunday also half day. That is how the first 5 years went by. And after 5 years, I decided I will not start this 5:45 a.m. lecture because it used to spoil my family life. Yes. And Sunday also I stopped. So I just made myself a little bit comfortable, but that is after overcoming the challenge of getting the number of students. Once the class is set, Yes. once the class is set, I felt I'm comfortable now. The students will come in any timing which I offer. जब वो दादागिरी था, उस समय stopped at 5:45 a.m. batch. ग्रेट सर. मतलब ये इससे हमको क्या सीखने मिलता है कि यू शुड हैव दैट पोटेंशियल टू अट्रैक्ट द क्राउड. दैट शुड बी एब्सोल्युटली शुड बी दैट. बाकी सब सेकेंडरी है. मतलब बाकी देखो बच्चे ही नहीं है तो बाकी का क्या करेंगे. मतलब बाकी के रिसोर्सेस एसी लगाकर सब चीज लगाकर अगर बच्चे ही नहीं है सो व्हाट वी विल डू. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट इज द लर्निंग वी कैन सी हियर कि हाउ टू गेट दोस मैक्सिमम स्टूडेंट्स. एंड अगेन सर ने कहा एक बहुत, मैं काफी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लेता हूं तो उसमें कुछ क्वालिटीज ऑफ टीचर की जब मैं बात करता हूं तो उसमें सबसे लास्ट क्वालिटी, मतलब लास्ट नहीं होता, पूरे पॉइंट्स कवर करने के बाद मैं पूछता हूं ये एस से क्या आता है आप मुझे बताइए. सी से कंपैशन आ गया, सी से कमांड आ गया, ऐसे. तो बोलते नहीं सर नहीं समझ में आ रहा. तो मैं सेंस ऑफ ह्यूमर कहता हूं. दैट ब्रिंग्स, क्योंकि बच्चे क्या हो गए, आई एम नॉट टेलिंग कि बच्चे लेजी है, बच्चे एंटरटेनमेंट. जब पढ़ाई के साथ ऐसा कुछ आता है तो देखो इट इज हाउ यू टीच ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अंदर अगर ह्यूमर रहा, हैप्पीनेस रहा तो बच्चे सेम चीज सीखते हैं. मैं भी जब पढ़ाया करता था तो अलजेब्रा में 4 सम सिखाने के बीच में एक शायरी मार दी तो वो बच्चे ना वो शायरी लिखते थे उसके बाजू में, उसी सम्स के बाजू में, एंड दे यूज्ड टू एंजॉय इट इन सच ए वे. इवन एट दिस मोमेंट वी रिमेंबर दोस टीचर इन आवर स्कूल जो हमको हंस के सिखाया, स्माइलिंगली सिखाया. Even I will tell somebody again told me कि whenever you enter the platform, whether we are giving a lecture at Alliance or Rotary or even in your own class, पहला जाके एक स्माइल दे दो. स्माइल देने के बाद number one you will become comfortable. Yes. And the audience will also become more comfortable. Absolutely, absolutely. So internally once you smile, सामने वाला also smiles. ऐसा लगता है कि अपन बहुत जन्मों जन्मांतर तक पहचानते हैं. और we become very comfortable with the audience. So we can say smile is contagious. It has to be contagious. Yes. और दूसरा क्या होता है, हम इसको NLP में कहते हैं. सर इज ऑल्सो एन NLP practitioner and a coach into that. ये कहते हैं आपका चेहरा वो पॉजिटिवली एंकर होता है. Yes, anchoring. ना यू बिकम ए पॉजिटिव एंकर. मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूं कि आप बच्चे के सामने जब आते हैं तो बच्चे के लिए वो आपका चेहरा क्या है, गुस्से वाला नेगेटिव एंकरिंग है, अरे मम्मी आ गई, अरे डैडी आ गए. वो नेगेटिव एंकरिंग है, अरे मम्मी आ गई, अरे डैडी आ गए, अय्यर सर आ गए, ऐसा. व्हाट इज योर बॉडी लैंग्वेज गेट एंकर्ड विद देम, वो अट्रैक्ट्स द एंटायर थिंग. एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच सर. हम थोड़ा आगे बढ़ते सर. लाइक कितने साल से, लाइक हाउ मच टाइम इट टुक फ्रॉम वो जीरो टू, होता है ना स्केल अप करने. कुछ लोग क्या होते हैं बहुत स्ट्रगल करते हैं 8-10 साल तक, फिर देन स्केल अप करते हैं, या 1-2 साल में ही हुआ. एंड हाउ इट इज, लाइक हाउ वाज योर जर्नी? I was very fortunate enough in this matter, but since I was already teaching in other coaching classes,
तो उधर थोड़ा मेरा नाम बन चुका था. So when I opened on my own, the students automatically came to me. So scaling up, I should say, as I told you, I began on the rented premises, and within 1 year, I purchased the same rented premises. So इतना धंधा हो गया था. So within 2 years, मेरा scaling up हो चुका था, and for the last about 20 years, I was only has to maintain that scaling up. Okay. So that scaling up, I maintained very well. I used to get in every batch. I tried other techniques like थोड़ा बैच से हट जाओ, दूसरे दो सिखाने के लिए. I lost the personal touch. स्टूडेंट मेरा स्माइल देखना छोड़ दिए, तो उस समय I lost some students also. Okay. Then it became a boring Iyer class. Not that Iyer class with fun जो होना चाहिए था, वो जो हमारा एक ब्रांडिंग जैसा हुआ था, टैगलाइन जैसा हुआ था, वो जरा दूर हट गया. So again I entered the batch, again make the student comfortable, and जो batch में नहीं भी जाता था, I just when the batch used to leave after the lecture, तो मैं स्टूडेंट के सामने बाहर के खड़ा होता था, ऐसा स्माइल देता था. So, as all class owners know, कि national education policy, which is also called as new education policy, has come. तो सर जब भी कोई भी सिलेबस या न्यू एजुकेशन पॉलिसी आता है, तो स्कूल कॉलेजेस को तो ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेशन है, द चाइल्ड गेट्स अ सर्टिफिकेट फ्रॉम दैट, तो उतना थ्रेटनिंग नहीं होता. बट जब भी सिलेबस चेंज हुआ है, कोई नई पॉलिसी आई, तो क्लास ओनर हमेशा घबराया हुआ रहता है कि हम सर्वाइव करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं, क्या एनईपी कोचिंग क्लास इंडस्ट्री को वाइप आउट करने को आया है, ऐसे सब सवाल आते हैं. तो आप तो 39 ईयर से एक्चुअल टीचिंग प्रोफेशन में हो, तो कितने सारे बार सिलेबस चेंज हुआ रहेगा, पॉलिसीज चेंज हो रहेगी, क्रेडिट सिस्टम आया होगा, मेनी थिंग्स लाइक 39-40 ईयर्स सिखाना मतलब एक जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन तक चले जाए. तो ऐसे जब पॉलिसीज चेंज होते तो क्या हमको घबराना चाहिए या कैसा, मतलब हाउ व्हाट शुड बी द मैसेज टू द क्लास ओनर्स देयर? एक बार धंधे में उतर गया तो डरने का करके डर रख के कुछ मतलब नहीं है. सवाल ही नहीं सर. For an entrepreneur, the policies, government policy will change, the tax structure will change, the syllabus will change, colleges will have their own syllabus, autonomous college होएगा, so many changes will take place. And if at all you are an entrepreneur, you should know how to adjust to this new scheme of things. Anyway, after 12th, जो भी क्लास चलते थे, उसका तो सिस्टम ही खत्म हो गया. So Yes. those who are thriving on degree college education, and because of the grade system, वो तो बंद ही हो गया. So now they have to adapt to 11th, 12th school academy. They must be having their own infrastructure, good number of teachers. अभी 9, 10, 11, 12 साथ में आ गया है. It is a block together. So those who are running for 11th and 12th, they should start even 9th and 10th. And 9th and 10th, 11th, 12th एक collaboration होना चाहिए. And again, they should start thriving. Now, since it is called national education policy, now that the limitation of area is over. Right. National means suppose I'm teaching in Mumbai, I can teach in Madhya Pradesh, I can teach in Uttar Pradesh. Yes. Actually, even by online method, our number of students from all over India has increased very much. Of course, provided you are excellent and providing good quality education to the students. We as educator also we are not clear कि how to proceed further. तो parents लोग का तो और भी कंडीशन खराब है, तो they will not take the risk with their children. So जैसा बच्चा 9th, 10th, 11th, 12th में आएगा, वो कोचिंग क्लास में आने ही वाला है all over India. तो अपना काम है कि we have to provide good quality education, sincere education, and catering to the wide variety of audience for us from the entire India. I feel our number of students will increase 10x. Yes. If at all we persevere and stay in the business. Yes, that's it. So NEP will open new boundaries. No boundaries. There will be no boundaries. We were restricted to Andheri, we were restricted to Kurla. Now, like earlier when I used to conduct my graphology sessions, so I used to conduct at Andheri, maximum at Borivali. These were the two major places. Yes. Now, when COVID came, so now across India, so across the world, we are getting things. Yes.
सो द बाउंड्री हैज एक्सपांडेड नाउ, वो जो पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया है. सो यू हैव टू अडेप्ट. लाइक एनईपी अभी समझो कॉमन एजुकेशन पॉलिसी. फॉर एग्जांपल हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं, एनईपी 100% विल बी अ कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया. एंड वी कैन हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, वी कैन हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम एनीवेयर इन द सोसाइटी. सो एवरीथिंग ना, हर डिसएडवांटेज में एडवांटेज होता है. वी शुड नॉट सी दैट इज व्हाट इज. सो माय फ्रेंड्स, लाइक जैसे कि सर ने कहा कि उतरे हैं तो फिर करना ही पड़ेगा ना, करना ही है. तो फिर जब करने में तुम कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालोगे, rather than resisting. बोलते ना, अगर आप रेजिस्ट करोगे तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करोगे. If you resist, then you will not exist. And you have to sincere to the profession. Yes, sincerity is ultimate, my friends. मतलब अगर समझो आपने, सर ने 39 years पहले पढ़ाना स्टार्ट किया और आपने 15 साल पहले क्लासेस किस हेतु से स्टार्ट किया था ना, what was the sincerity towards the profession. Absolutely. सो वो अगर कंटिन्यू रहेगा तो विल ऑलवेज सर्वाइव. लाइक कभी भी कौन सी भी पॉलिसी. यस, तो दैट इज हाउ वी शुड टेक इट फर्दर. सर फाइनल एक जाते जाते सर एक छोटा सा, क्योंकि हमारे सामने एजुकेटर्स हैं, कोचिंग क्लास ओनर्स है, बहुत सारे टीचर्स ये मैगजीन्स को देखते हैं. अभी तक कुछ 2,500 से 3,000 हमको व्यू मिला है. सो जाते जाते आपका तजुर्बा, मतलब मैं हमेशा बोलता ना कि एक टीचर हो या क्लास ओनर हो या कोई भी बंदा हो, ही इज अ लीडर. He is a leader. He has to lead. जैसे कि मैं फादर हूं, मेरे घर I am a father. So I have to lead as a father. I have to lead as a mother. Person has to lead as a mother, lead as an entrepreneur, lead as a teacher. So what is the message, sir, to this audience, those who are educators out there, from your life experience? As Prajesh sir has just said, since we are the educators, so students look up to us in very different ways. We are the idol for them. Right. बहुत बार मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि कभी एयरपोर्ट में कोई स्टूडेंट मिल गया, कोई रेस्टोरेंट में स्टूडेंट मिल गया, कोई कुल्लू मनाली के हिल में स्टूडेंट मिल गया, एंड दे गिव सो मच रिस्पेक्ट टू अस कि हमारा फैमिली मेंबर्स भी बोलते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा क्या तुमने सिखाया कि ये लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं. तो व्हेन वी टीच स्टूडेंट्स, वी शुड बिकम ए रोल मॉडल. तो उसमें पंक्चुअलिटी आ गया, गुड ड्रेसिंग सेंस आ गया, लैंग्वेज अच्छा आ गया, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग डिमेनर अच्छा आ गया, how we behave with the naughty students, sometimes some good elements may be there, how we behave with them, all these are noticed by every student, and he takes us as the role model after the parents. So even when we have that parents teachers meeting, तब पेरेंट्स को ही बोलते हैं कि जब तुम बच्चे को बोलते हो कि मोबाइल दूर रख, तो पहले तुम मोबाइल दूर रखते हो क्या? If you cannot keep away from the mobile, then we have no right to tell the student to be away from the mobile. Right. If we cannot be away from the TV, we cannot tell the student कि be away from the TV. हम लोग गेम नहीं खेल सकते हैं तो वो लोग भी गेम खेलना नहीं छोड़ेंगे वो लोग. So all these are how we behave. They will follow. Actually ऐसा बोलते हैं. I tell all my students also कि we should always be in the present. ऐसा भगवत गीता में बोलते हैं कि we should always be in the present. ये अपन मंदिर जाएंगे, चर्च जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, पूजा करेंगे, पढ़ाई करेंगे. Our thoughts go here and there. So I advise all the students play some games, physical games, cricket खेलो, football खेलो, hockey खेलो, table tennis खेलो, chess खेलो, carrom खेलो. Because only in the games you are always in the present. You cannot think of the previous ball. Yes. You cannot think of the next ball. You have to be completely present of what is going to happen in that moment. So my advice to all the students and the educators, encourage the students to play more and more, at least 1 hour per day, and that is also included in that national education policy. Yes. सर्वांगीण विकास हम लोग कहते हैं ना, 360 डिग्री डेवलपमेंट. पुराने जमाने में जब हम पतंग उड़ाया करते थे तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों का कॉम्बिनेशन होता था. Absolutely. और हम आसमान में उस पतंग को देखते थे तो फोकस बढ़ता था और ऊपर से ढील, नीचे से आड़ा ज्योमेट्री होती थी और हवा के रुख में और हवा के खिलाफ में लेके जाना फिजिक्स होता था. Exactly. तो ये सब कैलकुलेशंस. तो क्या होता, और सर ने जैसा कहा, मुझे मेरा बचपन याद में, पतंग उड़ाते उड़ाते इतना प्रेजेंस में था कि पीछे गाय थी, मेरे को दिखी नहीं, उठा के फेंक दिया मुझे. तो सो दैट इज दी एडवांटेज, सर राइटली सेड. और दूसरा सर ने कहा कि बी द रोल मॉडल्स. बच्चे हमेशा आपको एक बोलते हैं ना कि एक नजरिए से देखते हैं. सो मैं इस
आज के इस इंटरव्यू को इस लाइन से एंड करना चाहता हूं कि हो अगर अंधेरा तो रोशन कर दे अपने नूर से, हो अगर अंधेरा तो रोशन कर दे अपने नूर से, भटका अगर हो कोई वो भी देखे दूर से। बच्चे भटके हुए हैं, उनको नहीं मालूम क्या सही है क्या गलत है। सो वही है गुरु का काम, अंधेरे से उजाले की ओर, भटका अगर हो कोई वो भी देखे दूर से। वांट टू ऐड कि अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अपने क्लासेस में मोबाइल यूज ना करें तो हम लोग खुद मोबाइल लेके न जाए इन द क्लासरूम। यस, सो बी दी रोल मॉडल्स। मतलब मेरे पास जब भी पेरेंट्स आते हैं मुझे बोलते हैं मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, टीवी देखता है, तो उसके घूमता रहता है, भटकता रहता है, सुबह उठता नहीं है, ऐसा सब बोलता है। तो मैं पेरेंट को बिठाता हूँ, मतलब ये जो कुछ भी आप बच्चे के बारे में बता रहे हो आप करते हो क्या? एब्सोल्युटली। So that is that. Be the role model and be the change what you're thinking of. You will change the world. Absolutely. Yes. So thank you so much, sir. It was a great, indeed, a great interview with you. The energy transformation was there, sir. ऐसे ही है वो बोलते हैं ना, वो hilarious, वो हारमोनी लाना, वो हंसना, वो चेहरे पे स्माइल लाना। मैं तो आज यही है कि कहाँ पर भी जाओ आप चेहरे पे स्माइल लाओ, हैप्पीनेस रखो। गौतम बुद्ध ने अपने जेन मास्टर थे लाफिंग बुद्धा हमेशा हर जगह जब जाते थे तो हंसते थे जोर जोर से, और उनको देखकर दुनिया हंसती थी। तो दुनिया बोलती थी वो पागल है, हंस रहे हैं, लेकिन वो बता रहे कि तुम पागल हो, तुम हंसते नहीं हो। मतलब उनका मेरे पास एक लास्ट वीक म्यूचुअल फंड वाला आया था और मेरे को एक बड़ा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। मैं बोला आई डोंट नो द पर्पस ऑफ माई लाइफ बट आई लिव डे टू डे। और सुबह उठने के बाद मेरा पूरा दिन का एक ही पर्पस है, पूरे दिन में आई शुड हैव 15 स्माइल्स एंड 5 प्रेज। ग्रेट। 5 लोग का तारीफ करूं और 50 कम से 15 मेरे चेहरे में स्माइल हो। उससे ज्यादा होगा तो अच्छा ही है, बोनस है। लेकिन इफ एट ऑल यू थिंक वेरी डीपली, हम लोग दिन में 15 बार स्माइल नहीं करते और 5 लोग का तारीफ किया, 20 लोग को गाली देंगे, इन 5 लोग का तारीफ नहीं करेंगे। So that is the only purpose of my life कि दिन भर ये करते रहो, जिंदगी अपने आप आसान होते जाएगा। Right, sir. Great. Thank you so much once again. So we end the interview here. We'll come with another stalwarts interview in next episode, next magazine. Thank you so much.